देश के दिग्गज फुटबॉलर रहे बाईचुंग भूटिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे आमने सामने हैं। बाईचुंग भूटिया ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और उसके अध्यक्ष कल्याण चौबे की तीखी आलोचना की है। उन्होंने चौबे पर भारतीय फुटबॉल को बर्बाद करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। कल्याण चौबे के बारे में पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने कहा कि कल्याण चौबे को हटाने के बाद फुटबॉल का स्तर बढ़ेगा, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से और नीचे नहीं जाएगा। जब कल्याण जैसे लोग होते हैं तो इससे सभी की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। जिन लोगों ने उनका समर्थन किया उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। भारतीय फुटबॉल ऊपर जाएगा इसका तो गारंटी हम नहीं दे सकता, लेकिन इससे नीचे डेफिनेटली उसका हटने से नहीं जाएगा। सो आई थिंक जो अभी लास्ट 2-3 साल में देखने को मिला है, रैंकिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, मोर देन दैट द मैनेजमेंट वाइज, एंड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, करप्शन चार्जेस, एलिगेशंस, one after another, 3 general secretary changes, policies में जो changes है, I think it's really damaged Indian football in a big way. So my only request is, I think the government of India has supported so well for a sports person to come and lead. But when you put wrong people, it damages everyone. Like today, because of Kalyan Chobe, I think a lot of our sports person, including footballers, other athletes, are getting damaged because there is an opportunity. We have been fighting to sports person to come and run. And the government of India has supported us. And now when you get people like Kalyan, it damages everybody's reputation. And today, thankfully, I think people who supported him to become have also realized that they have made a mistake. So in future, my only request is that let's bring in somebody who's going to work sincerely, honestly for the upliftment of football. And not have a lot of these dodgy deals, controversies after controversies and all that. Let's have an honest, nice person who can take the game forward. It's struggling a bit in terms of ranking, in terms of performance, but I still feel we can still qualify for the Asia Cup. Just 2 matches gone. If we can beat Singapore in October in Singapore, we've got a good chance. I think just the planning strategy, I don't know who's going to be coach now, if Manalo continues or some new coaches. I think set plan properly, get the right players, and we still have chance to qualify. And have a long-term planning, just not have a vision 24/7 in paper and keep it, and then declare that 2026 may will be top 10 footballing nation in Asia and do nothing. We've got to really start working grassroots level with honesty and sincerity, and state associations have to be supported and funded well for a lot of grassroots football programs so that players are produced from there. बाईचुंग भूटिया के आरोप पर कल्याण चौबे ने भी जवाब दिया। कल्याण चौबे ने कहा कि इस देश में सबको अपनी बात रखने की आजादी है।